Hello everybody, welcome back to another episode of Medical Matters. Today the focus revolves around gynecology and specifically the condition of PCOS जो बहुत common है आजकल, and to dissect that we have a very famous gynecologist present with us today, and let's welcome Dr. Maria Khalid. Assalamu alaikum Dr. Maria, how are you today? Assalam, I'm good. Okay, so if you could just quickly introduce yourself to our viewers so they get familiar with you. Yes, sure. I'm Dr. Maria Khalid. I'm currently working as a consultant obstetrician and gynecologist at Ziauddin Hospital, and I'm also working in their teaching faculty in the same department. So, Dr. Maria, आज का topic हमारा is something that is very prevalent, very common these days, Exactly. especially in young girls, and it is often like I see a lot of girls stressed because of it. So it's PCOS, polycystic ovarian syndrome. I'd like you to elaborate. आम इंसान को अगर समझना हो कि क्या है और क्यों होता है. So, polycystic ovarian syndrome, it's a very common condition, as you said, and it's more prevalent in young girls nowadays, and it's what is stressing them a lot. So, that's why today I'm here to talk and spread awareness about it. And as you can see that polycystic ovarian syndrome is mainly because the ovaries, every woman has ovaries, tubes, and uterus. So, these ovaries, they get enlarged. And it's not because they are obese and that's why they have PCOS, but it's the opposite. Okay. Means when one woman has PCOS, then She's likely to gain weight. yes, they are likely to gain weight, and when they gain weight, the PCOS becomes worse. It's a cycle. It's a cycle, okay. Yeah. So PCOS is something, PCO is something that you are born with and you die with. Okay. And it's there by birth, it runs in families, and it's in your genes, but it's not symptomatic sometimes. In most of the women, it's not symptomatic, and young girls, they would just come up like for regular scan, and it would just show up the polycystic ovaries, and that would just make them worry that why is it there, but they would have no symptoms. But when they have symptoms, that's what it makes polycystic ovarian syndrome. Okay, and then they will have some group of symptoms, like should I talk about Yeah, please symptoms? elaborate. Okay, so most commonly the women will have symptoms like will affect their periods, and they will have like prolonged cycles. They will not have periods for 3 months or 4 months, or some women will face difficulty in childbearing. And some women will have issues with the weight and will have extrafacial or body hair, or some women will have acne. And this all, right now today I'm here more to discuss about its long-term effects, because nobody talks about that. Okay, so how it affects your whole well-being and how it impacts your mental health, because your own body image, it has a great impact on your self-esteem and how you feel about yourself. So it has a great impact on your mental health. The girls, they become, at this age, they become very depressive about considering about their body image, and it affects their mood, their quality of life, and how they interact with people overall. In their workplace, in their home, it affects their life. So this points, it's weight reducing, basically weight reduction, it's very challenging for them. So आजकल आपने नोट किया होगा PCOS specifically it has increased significantly. कुछ साल पहले तक हम इतना नहीं सुनते थे, and these days, you know, every other girl you'd hear that, you know, they're diagnosed with PCOS. So what do you think are the causes that in the recent times it has increased so much? Is it the diet? Is it maybe the environment we live in, or the habits that we have adapted? क्या cause है कि अब बहुत ज़्यादा increase है इस condition? It's a very interesting question, Unoosha. So what happens is कि lifestyle का बहुत ज़्यादा impact होता है. तो क्योंकि अब lifestyle बहुत change हो गया है, people are more into different types of diet. They're more into consuming fast foods, which is really affecting their whole body image. And how do we come to a diagnosis for the polycystic ovaries? क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई diagnostic modality नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास testing आ गई है which can help in diagnosis, or
it's a very famous criteria for the diagnosis called as Rotterdam criteria, which was decided by the group of doctors in the meeting in Rotterdam. तो उसमें कहा था कि अगर किसी भी खातून में 3 में से 2 चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, सिंड्रोम है, जिसमें से क्या होता है कि अगर किसी के पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं, प्रोलॉन्ग हैं, जैसे 2 या 3 महीने पे आते हैं, या किसी को एक्स्ट्रा फेशियल हेयर हैं, या बॉडी पे बहुत एक्स्ट्रा हेयर हैं, या किसी को अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो किसी को इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. किसी के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, किसी को अल्ट्रासाउंड पे PCOS हो सकता है. तो अगर 2 ये चीज़ें हैं तो फिर हम डायग्नोज करते हैं किसी भी लड़की या खातून को टू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. Okay, so you mentioned irregular periods. Can you categorize irregularity में कब आ जाती हैं periods? If it's like अगर 2-3 दिन का delay है, is that also because कहते हैं कि sometimes तो ऊपर नीचे cycle रहता है. Yes, exactly. So what exactly would categorize as irregularity in your menstrual cycle? Okay, yes. वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर 28 डेज़ का हर वुमेन में नॉर्मल रेगुलर साइकिल होता है, अगर वो 1 वीक तक प्रोलॉन्ग हो रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल एंड इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन, इट्स नॉर्मल. हाउएवर अगर 35 डेज से ज़्यादा किसी का प्रोलॉन्ग हो गया है तो दैट वुड बी काउंट एज इरेगुलर, और अगर किसी को 1 मंथ प्रोलॉन्ग हो गया है या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, दैट वुड बी काउंट एज इरेगुलरली प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स. Okay. And if you have to identify just say PCOS, and like you mentioned that in each individual they would have different symptoms. Yes. It would present itself differently. Yes. तो किस तरीके के symptoms हैं? They are like something that would be very different from the other person, but both of them would have PCOS. अचानक से वेट का गेन होना और उसकी वजह से और सिम्टम्स हो जाना. बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था कि वेट गेन होने की वजह से इसके सिम्टम्स अयां होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, साइकिल्स प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी अचानक से, या किसी को चेहरे पे बहुत एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएंगे, या बॉडी पे हेयर आना शुरू हो जाएंगे, या बॉल्डनेस होना शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, या बहुत कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी कंसीव करने में इश्यूज़ होते हैं. तो दैट इज़ अनदर इशू कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किस तरह से उसको अफेक्ट करता है. और वंस अगैन आई वुड लाइक टू से कि मेंटल हेल्थ की बात मैं करूँगी कि उसको कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली, उसका बॉडी इमेज के हवाले से उस पर क्या इफेक्ट होता है. ओके, सो अब अगर फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव आइडेंटिफाइड कि उनमें ये मसले हैं, दे फेसिंग दीज सिम्टम्स, सो व्हाट do you think is the right approach for them to take? उसके बाद उन्हें symptoms feel हुए, उसके बाद उन्होंने क्या करना है? किसी को भी ऐसा लगता है कि अचानक से वेट गेन हो रहा है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, और बिकॉज इसमें रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो दे विल रन सम टेस्ट्स ऑन देम. How would a doctor go ahead with it? Because ultrasound तो एक चीज़ I know. What other measures are there to identify and diagnose PCOS? Just like I said, it's symptomatic, and with some tests like ultrasound and some blood tests. Together with that, we come up to our diagnosis. So, like we said, mental health की अभी बात हुई थी, right? So, I am sure that a lot of patients would come to you जिनको PCOS है, especially women who might have trouble conceiving. तो उनकी mental well-being, उनकी emotional well-being. So, do you think gynecologist, पहली बात तो I think पाकिस्तान में इतना ही नहीं होता, but again I'd like your point of view in that कि gynecologists इस चीज़ को cater करते हैं. Do you in your treatment process do you guys keep in mind कि इनकी mental well-being, इनकी emotional well-being को भी हम थोड़ा cater करते हुए treatment को लेके चलें? It's a very very good question, because nowadays mental health is a very important factor in any women's or girl's life. I would like to very clearly say that most doctors in our city or in our country, they don't really ask women about their mental status, and it's very important and very easy just by asking few simple questions like how are you feeling in the past couple of days, have you ever been bothered or feel low or depressed in the past couple of weeks, or have you been bothered by losing interest in your daily activities. Just these two simple questions and you can come up to know that whether she is suffering from this problem. Okay, so moving forward, I would like you to elaborate a little on the common myths, because हमारे माशरे में misconception ज़्यादा
रिवॉल्व कर रहा होता है बीमारी को या मसले को, एंड लोग बहुत देसी टोटके, घरेलू नुस्खे ये सब भी कर रहे होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक आर द कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस दैट यू वुड लाइक टू डिबंक, स्पेशली फॉर द ऑडियंस हु आर वाचिंग, कि ये है और ये नहीं है बिल्कुल भी? व्हाट इज गायनेकोलॉजिस्ट अप्रूव्ड थिंग्स? ओके अनुषा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जो ऑडियंस है उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें लगता है उन्हें PCOS हो गया है और उनका वेट गेन उसकी वजह से हो रहा है, जबकि द थिंग इज़ ऑपोजिट. जब किसी का वेट गेन होता है उसकी वजह से PCOS के सिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं. तो मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूँगी कि PCOS की वजह से वेट गेन नहीं होता, बल्कि वेट गेन होने की वजह से PCOS वर्स होता है. तो वेट गेन के अलावा कोई ऐसी बात जो आपने फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स के जहन में पाई हो कि मिसकंसेप्शन है एंड यू वुड लाइक टू डीबंक इट? उन्हें लगता है कि जैसे हम कभी कंसीव ही नहीं कर सकते. बिल्कुल. लेकिन या यू हेयर दिस अ लॉट कि इसको PCOS है, सो यू नो बच्चियों की शादियों में मसले होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि यू नो शी माइट नेवर बी एबल टू कंसीव बिकॉज ऑफ दिस. तो हाउ ट्रू इज दैट? ऐसा नहीं है. बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ हैं लेकिन दे डू कंसीव, और वी सी इट इन आवर नॉर्मल क्लिनिक्स के बहुत ख़वातीन आती हैं, उनको हम मेडिसिन देते हैं, ऐसी ओवुलेशन इंडक्शन कहा जाता है ऐसी ड्रग्स को, और वो बिल्कुल ओवुलेट करती हैं और फिर प्रेग्नेंट भी होती हैं, उनकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज भी होती हैं. ओके, सो हमने इस्टेब्लिश ये तो हो चुका है काफ़ी दैट इट्स नॉट क्योरेबल, बट with proper treatment it's very much manageable. Your day-to-day life can be very much managed. So what are the key treatments या key procedure जो डॉक्टर करता है जिससे एक PCOS वाले इंसान की ज़िंदगी आसान हो सकती है? लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे वो अडाप्ट करे, ऐसी क्या चीज़ें हैं that would make it easy for their treatment? उनूशा, आपने अपने सवाल में ही मेरे जवाबात बता दिए हैं वैसे तो, लेकिन number one treatment for PCOS is lifestyle modification. Having a healthy lifestyle, eating healthy, regular exercise, losing weight is the number one treatment for PCOS itself. और सिर्फ ये करने से it's going to do a little magic in their life and will reduce their symptoms, and all these symptoms that I have mentioned, like if they reduce their weight, they will their periods will become regular. It will help them in conceiving. It will with time it will help in the decreasing of the facial hair and the body hair. It will improve their mood symptoms and depression, and it's going to overall give a good impact on their mental health. अच्छा, वेट लॉस, बिकॉज यू हैव मेड इट वेरी क्लियर कि कितना सिग्निफिकेंट है इन ऑर्डर टू ट्रीट PCOS. Yes. बट देयर आर ऑफन वुमेन एंड इवन फ्रेंड्स दैट आई नो जिनका वेट लॉस जिनके लिए करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. कहते हैं कि होता ही नहीं है, हम कुछ भी कर लें. सो इज देयर अ वे that doctors would usually maybe there is a diet that you guys give या कुछ ऐसी चीज़ जिससे it would get easier, or maybe some tips and advice that you would like to give that would make it easier for them to lose weight and manage the condition? Yes, definitely. I would like to talk about that. डाइट के हवाले से मैं ये बोलूँगी कि they have to have in close contact with a dietitian and they have to do a regular checkups as well. और उसके अलावा डाइट के लिए low carbs diet and doing regular exercise, and especially if they stick to some proper diet plan, it's going to really help, and watch some motivational videos, and it's basically they are depressed and that's why they're not following their routine. If they come to this routine staying positive, that can really help them in reducing weight. अच्छा, so mental health की आपने बात की, what PCOS एक ऐसी चीज़ है that would definitely significantly impact somebody's mental health. तो do you think that because उनकी mental health affect हो रही है, stress बढ़ रहा है, maybe they are depressed, so उससे भी hormonal they would maybe have some hormones being released, कुछ मसले. So how critical it is कि हम उसको manage करें, because stress and depressive symptoms की वजह से PCOS would increase a lot or get triggered. उनूशा, आपने बहुत अच्छी बात की है. स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये हमारे ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको इनहिबिट कर देता है, और इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर द वुमेन हु इज ऑलरेडी सफरिंग टू कंसीव. Okay, because ovulation is an important thing to occur in every woman in order to have a baby.
So basically stress is working on that. So it's a very important factor along with weight reduction. I would like to highlight this point that they have to work on reducing stress. And for this, if they are facing problem, they can go to for some psychotherapies. Okay, so एक और बात कि it's often said कि if you use contraceptive pills, if it's a healthy couple and they're using contraceptive pills to avoid pregnancy, उस केस में it's said that अगर if the woman is having the pill, so it would affect her fertility, it would affect her periods in the long term, उनके hormones imbalance हो जाएंगे. How true is that, or how safe are contraceptive pills? अच्छा, जहाँ बात है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो अगर किसी कपल को कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो दे शुड बी काउंसल्ड मोर ऑन टेकिंग रेगुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, because taking it at irregular intervals for short time it can really affect their cycles. और फिर उसका भी इफेक्ट होता है. पेशेंट्स आते हैं, हमें तो स्पॉटिंग हो गई, हमें अब स्पॉटिंग हो गई, हमने फिर ली, हमें दोबारा स्पॉटिंग हो गई, बिकॉज ये उसका साइड इफेक्ट है एंड इट कम्स विद द मेडिसिन. तो बेसिकली वी यूजली एडवाइज देम टू हैव सम रेगुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. और अब कुछ रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं जो ये कहती हैं कि इट कैन ऑल्सो हैव सम इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कैंसर, गायनोकोलॉजिकल कैंसर मेनली. तो इसलिए वी डू encourage them taking these pills, of course, for once or twice, but not for a regular form of contraception. So moving towards the end of our discussion, I would like कि आप जाते जाते एक long term consequences जो हैं PCOS के, and also long term treat कैसे किया जाता है इसको in the long term, उस पर भी if you can shed some light. Alright. तो होता ये है कि जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और जिनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, BMI से हम कैलकुलेट करते हैं, BMI किसी का भी अगर 25 या उससे ज़्यादा है तो उनमें चांसेस हैं दैट दे कैन हैव डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ. और वो ख़वातीन जिनमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, जिनमें PCOS है, वो प्रेग्नेंट हैं, तो उसके लिए हम ख़ास टेस्ट भी करते हैं टू नो इफ़ दे आर बिकमिंग डायबिटिक, बिकॉज उनमें और ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इवन आई थिंक द रिस्क इंक्रीजेस के बच्चे को भी हो सकती है. अगर मदर को प्रेगनेंसी में हुई है तो लेटर इन लाइफ दैट किड इज़ ऑलवेज एट रिस्क ऑफ, इट्स ऑल्सो एट रिस्क ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिस कैन हैपन टू दैट किड एज वेल. अच्छा, उसके अलावा हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और मेंटल हेल्थ की बात की, डिप्रेशन लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसको. और एक और चीज़ कि अगर किसी को साइकिल्स 4 months या 5 months पे आते हैं तो एक और रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं कैंसर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द वूम. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यूजुअली अगर किसी को 20 साल में 4 साइकिल्स आते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल. This I tell to every woman. If you're having periods every 3 months, that's fine. Be happy. And you don't need to take any hormone. It does not conclude as irregularity. अगर आपको साल में you're getting 4 cycles. Yes, because it's coming on its own, that's normal. That's fine for you, for your body. But if it's becoming less frequent than that, means fewer than 3 cycles in a year, then you should be screened for having cancer of the lining of the womb, because that increases the risk. So this would, I would really like to spread awareness on this point. So on an ending note, what advice or any tips and tricks that you could give to the common user जो घर पे बैठे हुए देख रहे हैं हमें, what advice would you like to give to them? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि एक तो स्ट्रेस फ्री रहें. ऑफ कोर्स कि ये आपकी बॉडी इमेज के बारे में आप कैसा परसीव करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करता है, आपको डिप्रेस कर सकता है, लेकिन स्टे हैप्पी. सी मीट हैप्पी पीपल अराउंड यू एंड थिंक पॉजिटिव, एंड ऑल्सो ट्राई, एंड ऑल दिस विल हेल्प यू रिड्यूस योर वेट. तो अपना वेट रिडक्शन में बेसिकली काम करें, और अगर नहीं हो रहा आपसे तो मीट योर फ्रेंड्स, meet people who can help you, like physiotherapists who are dedicated people to help you, and also a dietitian, and follow a proper diet plan for this reason. So our session gets over, and thank you so much for your presence. It was great having you, and inshallah we can collab in the future. Thank you so much, Unoosha. It was wonderful having you. Thank you.